Hi everyone, good evening. We're live now. Good evening, everyone. Good evening, Padmavati, Ashutosh, Deepika, Mr. Kanan. Good evening. Good evening, Raghavendra. Good evening, Wrinkle. Good evening, everyone. Ek confirmation that my audio and video both are clear and you are good to start with the session. अच्छे से आप रिविजन करके आए हो ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे. These sessions are not for my benefit, these sessions are for your own benefit. तो अगर आप ये sessions join करते हो तो make full use of it, right? Revise timely and attempt all questions timely. Hi everyone, please give me a confirmation. भाई सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, all clear. Thank you so much. Thank you Raghavendra, thank you Kunal. Good evening everyone. Yes, it's all clear. Okay, great. चलो भाई, तो क्या हम तैयार हैं आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए? इन टुडेज सेशन आई हैव अराउंड 18 क्वेश्चंस. अच्छा, एक बात मैं और बोल दूं, क्योंकि कुछ बच्चे उठ के आते हैं और फिर बोलते हैं मैम और क्वेश्चन डालने चाहिए. भाई, दिस इज नॉट माई क्वेश्चन बैंक या कोई इलस्ट्रेटिव लिस्ट या कुछ ऐसे क्वेश्चंस की सेट ऑफ क्वेश्चंस हाँ पूरा कंपाइलर हम बना रहे हैं. नहीं, दिस इज अ काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज. तो आप इसको अपने टेस्ट की तरह लो. दिस इज जस्ट a compilation of some selective questions and it will always be like that, right? तो इस सजेशन को मैं कभी भी नहीं मानने वाली हूँ कि मैं और क्वेश्चन डालूँ. भाई, एक चैप्टर में मैं 50 क्वेश्चन लेके बैठूंगी, 2 घंटे का यहाँ पे मैं सेशन लूंगी, आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होएगा. ठीक है, आप रिवाइज करके आओ. हैव सम इंपॉर्टेंट वंस, फेवरेट एग्जामिनर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर, मतलब ऐसा कंपाइल करके हम क्वेश्चन सिलेक्टेड करते हैं तो उसमें मजा आता है ना. चलो, ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले एक लाइक तो बनता है, सो एवरीवन कम ऑन, 1 लाइक फॉर द वीडियो एंड हियर वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले लाइक कर लो वीडियो को. डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज नॉट येट पिन्ड, बट लिंक आपके साथ में तुरंत शेयर करवाती हूं. एंड डाउनलोड द पीडीएफ and we will start with our session. Yes, ma'am, I agree. Thank you so much for understanding our perspective as well. देखो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो ना हमेशा होती है. अभी जैसे फाइनल को पढ़ाओ तो इंटर वाले बोलेंगे कि मैम हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारे लिए आप क्या करेंगी, है ना. तो अब कम क्वेश्चन लो तो ज्यादा क्यों नहीं हो रहे, ज्यादा ले लो तो मैम कुछ सिलेक्टेड कर देती. मैम एमसीक्यू कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं कर रही. अरे भाई, सब होगा एक एक करके, है ना. पीडीएफ हैज बीन शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल. जिनके पास है लिंक वो टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. एंड फॉर द वंस हु डू नॉट हैव द लिंक हैज बीन शेयर्ड, आई थिंक, आई बिलीव. हाँ या ना? दो, 1 मिनट दो. वैसे तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पीडीएफ की आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा जरूरत रहती है. पीडीएफ इज फॉर रेफरेंस एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. यस, द लिंक हैज बीन शेयर्ड. यू ऑल हैव गॉट द पीडीएफ. इवन इफ यू हैवंट गॉट द पीडीएफ, भाई दिख रहा है ना स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखो और आंसर करो. अगेन टुडे वी विल कीप इट क्विक. 18 questions, so our target will be around 25 minutes. We will complete it. 18 questions, 18 minutes, ये थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है क्योंकि हम थोड़ी बहुत तो बातें करते ही हैं, है ना. बट अराउंड 25 minutes, मतलब by 8:30 we will try to wrap up the session. ठीक है, चलो. Board of Directors and Managerial Personnel, this particular file and this particular session does not incorporate your chapter of board meetings. ठीक है. When we talk about the directors, we have ideally 3 chapters, which comprises all the concept of directors as well as board meetings. So the chapter of board meetings is not there. Board of Directors and Managerial Personnel for 2016 syllabus, and Board of Directors and KMP, as you call, for the new syllabus. So ideally the curriculum is the same so far, and this session can be attended by both set of students. Okay, so already the poll for question number 1 is live, and let's see what it is. A person who fails to get appointed as a director in general meeting cannot be appointed as which director? Additional, alternate, independent, or nominee director? This particular question relates to section 161, which is ideally divided into 4 parts, and we read about the very first part,
right? Articles of association of any company confers some power on board of directors that, okay, fine, you can go ahead and appoint some director as an additional director, provided that director should not be some person who has failed to get appointed in a general meeting, right? Because ultimately otherwise it will be non-compliance now. Somebody who is being rejected by the shareholders is being accepted by the board and put in the same position. No, this cannot happen. So what is our correct answer, my dear? Our correct answer for this particular question is option A, additional director. The section itself, the very first line gives you the answer, and only 59% students have given me the correct one. We move to the next question. We end our poll here itself and we move to the next question. Please, I request once again for all those who do not know the rules, you don't have to write any answer in the chat box. If you cannot find the poll, please write your answers in your own notebook and you can tell me or share the result at the end. Question number 2, the poll is already live. Under Companies Act, the first director shall hold office. The first director shall hold office by the end of EGM, by the end of period as determined by articles, end of 3 years from date of appointment, or till first annual general meeting. Come on, everyone. Okay, I'm so happy to see so far 93% students are giving me the correct answer. I hope this ratio actually stays at 90% or more. Great. So this one is, I believe, a very simple question. Till the first annual general meeting, whereby the directors will thereon be duly appointed at the annual general meeting, right? So this was an easy question and I'm so happy to share that 92% students have given me the correct answer. Moving to question number 3. Escort Limited. Now here you might be required to do some kind of, no, not really, no, yes, some kind of calculation is undoubtedly needed. Question number 3. Escort Limited has 12 directors on its board. Remember, the maximum number of non-rotational directors the company can have on its board is 2, 3, 4, or 5. So here you have to do very slight working. See, we all know that according to section 152, we have to have at least 2/3 of directors to be rotational. That means maximum 1/3 can be non-rotational. 1/3 of what? 1/3 of the total number of directors. That means 1/3 of 12 can be non-rotational. So ideally, I have given you the answer, but our correct answer of question number 3 is option C. Very few students are participating in the vote. See, we cannot have the votes for a longer tenure, so be quick in participation of in poll. Around 69% students giving me the correct answer. We move to question number 4. Great going, students. Question number 4. In a public company limited, here you need more calculation. In a public limited company, there are 10 directors, fine, including managing director and nominee of ICICI. Okay. How many directors are liable to retire by rotation? 4, 5, 6, and 7. A, B, C, and D. First, you will go for the poll, and thereafter, if you have any confusion in this particular question, please drop in the comments. Because when I read this particular question, I have a doubt when I see when I look at the options. So if you also have the same doubt, or if you think anything otherwise, please drop in the comments so that I can know your perspective. Question number 4. Okay, I have some mixed type of votes. Around 54% saying, 52% saying option C, 21% going for option B, 13% option C, 13% option A also. All the votes are scattered throughout all the options. Let me show you some working. We have the total number of directors to be 10. Okay, please elaborate. I am doing that, not a problem. We have the total number of directors to be 10. However,
when we are computing, see, the directors who are independent or the directors who are the nominee directors, they are not liable to retire by rotation. So we exclude that, this nominee director. That means now we have the total number of directors to be 9, right? Out of these 9, two-third directors will be rotational. That comes out to be 6. Now, ideally in this question, they have asked how many directors are liable to retire by rotation. That means out of the 6, actually one-third should retire. That means 2 directors should retire, but they do not have 2 in your options. That means somehow they're trying to ask you about the rotational ones, right? So what do we have is option C, which is 6 to be the correct answer, right? I hope this is clear. Come on, everyone. If it is clear, we move to the next question. You refresh it, Kunal. The poll will be visible to you. All the students are actively participating in the poll. I hope this is all clear. Come on, everyone. You have to be active. You have to be quick. ऐसे ठंडे ठंडे पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा. चलो भाई आगे बढ़ती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. कोई लैग तो नहीं है ना? Yes, ma'am, clear. Okay. Chalo. Question 5, the poll is already live. Mr. Rajesh, a director of Grow Well Limited, died in a train accident. The board of directors would like to appoint Mr. Arun Kumar in place of Mr. Rajesh. Which of the following statement is true? The company has to call for EGM. The company has to continue with the existing number of directors till the next AGM. The company can fill up the vacancy at the board meeting, and none of the above. So we have 4 choices, and the choice is very evident though. Of course, it is considered as the case of section 161(4), right? See, whenever a director dies, there may be a casual vacancy, there may not be a casual vacancy, or the directors might choose not to fill the casual vacancy, right? So here the board has the power to fill that casual vacancy. So the board can fill up the casual vacancy at the board meeting. Very simple question. And wow, I'm so happy to see 90% of my students have given me the correct answer. Kya baat hai? Chalo. Next question. Come on, everyone. Question number 6. We have in total 18 questions in this particular PDF. Mr. Sharma is a director of Ankrit Limited, which failed to file its annual return from the year 2009-10. Okay. The maximum period for which Mr. Sharma will be disqualified from becoming a director in any public company limited is. अब 9-10 ऑल्दो इज नॉट रेलिवेंट, और वो ईयर चेंज करके हमने थोड़ा फ्रेश ईयर लेना चाहिए था, बट इट्स ओके. वी नो कि भाई कंटिन्यूसली अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है. एक इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, एक कंपनी बेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, राइट? सो वी नो दैट. So undoubtedly you are disqualified for reappointment in the same company, and you are also disqualified for appointment in some other company. But सवाल ये है कि कितने tenure के लिए होता है. When the company fails to do so, from the date when the company fails to do so, कितने साल होते हैं? Confusion ही confusion. 70% बच्चों ने दिया है मुझे सही जवाब, और इसका सही आंसर है, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज B, 5 years. Moving to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 की पोल लाइव होगी सबसे पहले, और बहुत ही छोटा सा क्रिस्प सा क्वेश्चन है. सो ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम ऑन दैट. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द पोल टू बी लाइव. द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, एक्चुअली देखो अब क्वेश्चन ना ऐसे थोड़ा गड़बड़ लिखते हैं. बाय द लिखा है तो यहाँ पे पूछना चाहिए बाय शेयर होल्डर्स, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, बाय गवर्नमेंट, राइट, बाय NCLT, ऐसा कुछ ऑप्शन देना चाहिए था, बट ऑप्शन ऐसे हमारे पास नहीं है. ऑप्शन हमारे पास थोड़े से फनी है, बट ठीक है, ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा सेट नहीं बैठता है. एनुअल जनरल मीटिंग कैसे ये पावर एक्सरसाइज करेगी? पावर हम AGM को कैसे देंगे? AGM में आप पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना? बट ठीक है, विल नॉट गो फॉर ग्रामेटिकल करेक्शंस.
पहला ऑप्शन है एजीएम, दूसरा ऑप्शन है बीएम, तीसरा ऑप्शन है एसएम which goes for statutory meeting, and fourth option is none of the above. So choose your option wisely. It is not a difficult question. Section 161 1, of course, and your correct answer is option B, board meeting. 73% students. Great. Okay, moving to the next question, question number 8. A company has 15 directors but intends to appoint more. एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं. द पोल इज लाइव, अटेंड फॉर द पोल. ओके, सेक्शन 149 of Companies Act says that a company can have maximum 15 directors, but we also have the proviso, and the proviso says that you may appoint or more directors or even beyond 15 directors by passing SR. And this limit is not applicable on two types of companies. Can anyone through comments tell me that on which two types of companies this limit of 15 directors is not applicable? That means such type of companies may have more than 15 directors even without passing any SR. Well, our correct answer for question number 8 undoubtedly is B, shareholders through special resolution. Fine. I think in this particular question, you have good clarity because 88% correct answers I've got. But nobody has commented yet in the chat box. Is there anyone who knows this? Chalo, finally I'm getting some answers. Government company, great. It's not OPC, government company is fine, but the other type of company undoubtedly is Section 8 company. Well done. Okay. Great, great, great. So happy to see this. Now, moving to next question, question number 9. A company may make payment to managing director or whole-time director or manager, but not to dash by way of compensation for loss of office or as a consideration for retirement from office or in connection with loss or retirement, with such loss or retirement. So this is exactly the text that we have of section 202, right, which we talk about compensation for loss of office, which is not available to all the directors. It is available to MD, WTD, manager, and not available to. This is exactly the language. You don't have to apply any brains. If you remember the text of the section, it's exactly, you have to just do that fill in the blanks as it is written. Any other director, independent director, interested director, or employees, undoubtedly it will not be employees. Okay, so let me see question number 9. How are your polls? Okay. So you are slightly confused between option A and B, any other director and independent director. Please, anyone who has given the incorrect answer, mark this particular question and get it rectified. Well, the answer is option A, any other director. Moving to the next question, question number 10. Every listed public company shall have independent directors of at least. कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे लिस्टेड पब्लिक कंपनी में? हम सबको पता है व्हेन वी रीड अबाउट सेक्शन 149(4) कि हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन लिस्टेड पब्लिक कंपनी एज वेल एज अदर प्रिस्क्राइब कैटेगरी ऑफ कंपनीज. अदर प्रिस्क्राइब कैटेगरी ऑफ कंपनीज यू नीड मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बट when we talk about listed public company, according to Companies Act we're talking, we're not talking about any other regulations of SEBI. Okay, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो कितने हमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए? लेट मी सी. चलो भाई, 90% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, विच इज ऑप्शन ए, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इसकी पोल बहुत जल्दी आनी चाहिए और मैं उम्मीद कर रही हूं, आप लोगों को टारगेट दे रही हूं कि कम से कम 95% बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही देंगे. राइट, वी विल गिव अ बिग शाउट आउट टू CMA स्टूडेंट्स. अगर इस क्वेश्चन का आपने 95% स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी जेनरिक, वेरी इजी क्वेश्चन. सेक्शन 151 का हमारा ये क्वेश्चन अबाउट स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर में आता है. व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल शेयर होल्डर?
shareholder holding shares of nominal value, they have not even asked anything else, clear सीधी चीज पूछी है, nominal value of not more than, राइट, लेस देन इक्वल टू, जैसे हम बोलते हैं 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000, A, B, C और D. I have given my vote. दिल तोड़ दिया मेरा आप लोगों ने. 87% स्टूडेंट्स. फिर भी इट्स गुड, बट बहुत इजी क्वेश्चन था यार, इसमें तो ऐसे मिलना चाहिए था. 95 मैंने उम्मीद की थी, सोचा था कहीं 90 पे जाके सेटल डाउन तो हो ही जाएगा, बट 88% स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर, व्हिच इज ऑप्शन बी, 20,000. प्लीज डोंट राइट आंसर्स इन द चैट बॉक्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. अगला सवाल, रूल 3. भाई रूल भी हमें बता दिया है. Rule 3 of Companies Appointment and Qualification of Director Rules 2014 provides that companies shall appoint at least one woman director. कौन सी companies shall appoint at least one woman director? See, हमारा जो सेक्शन 149(1) का प्रोवाइजोज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो हमारा सेकंड प्रोवाइजो आता है उसके साथ हम रूल 3 पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं भाई जहां पे कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो होना ही होना चाहिए. ठीक है, लिस्टेड कंपनीज हैं वो तो है ही हैं, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अदर पब्लिक कंपनीज की, क्योंकि लिस्टेड के केस में तो आ ही जाता है कंप्लायंस. अदर पब्लिक कंपनीज की अगर हम बात करें, पेड अप कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, टर्नओवर इज मोर देन इक्वल टू 300 CR. मतलब कंडीशन ए और कंडीशन बी बोथ आर कंप्लाइड विद. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर, ग्रेट, the correct answer will be option C, both the above. चलो बहुत बढ़िया, 90% यहां आ गया. बताओ, 90% of the students have given me the correct answer. सरप्राइज कर देते हो आप लोग मुझे, जहां मुझे लगता है कि ज्यादा आंसर्स आएंगे वहां पे कम आ रहे हैं. चलो खैर, ये लिमिट विमिट मतलब सब याद करके आए हैं. क्वेश्चन नंबर 13. अब जितने भी क्वेश्चन है देखो कितने छोटे छोटे हैं, तो बस फटाफट से करते हैं. Alternate director may be appointed when the additional is out of India for at least, when the other director, आप simple लिख सकते हो, is out of India for at least कितना months? 1 month, 2 month, 3 month, 4 month. फिर अगेन सेक्शन 161 में हमारा आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होता है, या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके हम ऑथराइज करते हैं, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बट बाय सिंपली पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन. बट ये कब अपॉइंट कर सकते हैं? इफ द डायरेक्टर हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 3 months. क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट आंसर इज सी. एक सवाल मेरा और आपसे, क्या जो ऑलरेडी एक डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है उसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाया जा सकता है उसी कंपनी का? यस और नो? प्लीज ऑप्शन नहीं लिखो बेटा आप चैट में. एक सवाल मैंने आपसे पूछा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड. तब तक हम क्वेश्चन नंबर 14 की पोल को लाइव करते हैं. वी एंड दिस पोल. 91% स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. आप लोगों ने ये सुन लिया है एंड इसका आंसर भी मुझे चैट बॉक्स में जरूर चाहिए. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. इफ अ पर्सन, नो, चलो वाओ, प्रीति नो, कुणाल नो, पार्वती नो, भाई सबका यूनानिमस आंसर आ रहा है मेरे पास, नो. वेरी गुड. तो एक नॉन डायरेक्टर ही हमारा ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है. क्वेश्चन नंबर 14 की पोल इज ऑलरेडी लाइव. इफ अ पर्सन अदर दैन रिटायरिंग डायरेक्टर इज प्रपोज्ड, अ चेक ऑफ डैश इज टू बी डिपॉजिटेड विद द प्रपोजल. कितने अमाउंट का चेक हम डिपॉजिट करते हैं? देखो सेक्शन 160 के हिसाब से देयर इज अ राइट फॉर कैंडिडेचर, है ना, बट ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू गिव द रिटन नोटिस ऑफ प्रपोजल एंड ऑल्सो यू हैव टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट, ताकि हम एलिमिनेट कर सके अननेसेसरी एप्लीकेशंस. तो हम कितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं? ये अमाउंट रिफंड भी हो जाता है. अगर आप इलेक्ट हो गए तब तो 100% रिफंड होगा ही होगा. अगर आपके पास 25% वैलिड वोट्स भी मिले तो भी रिफंड हो जाता है. बट व्हाट इज द अमाउंट? What is the amount? Is it 50,000, 75,000, 1 lakh or 2 lakh? Come on everyone.
कितने आए वोट्स? 88% बच्चों ने दिया है सही जवाब, विच इज क्वेश्चन नंबर 14 का सी, 1 लाख। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे डायरेक्टली सेक्शन पूछ रहा है, मतलब आप कहीं ना कुछ सेक्शन नंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो सेक्शन 203 में क्या है? बट ये बहुत इजी है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप बड़े आराम से आंसर कर दोगे। इज इट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी? KMP stands for Key Managerial Personnel. Is it about appointment of CS, that is Company Secretary, MD, Managing Director, WTD, Whole Time Director? So you have 4 options and let me see. Chalo, so far so good. 83% students with the correct answer. Question number 15, the correct answer is option A. It provides for the appointment of key managerial personnel. Very easy one. Question number 16. The eligibility and conditions of appointment of MD is mentioned in which schedule? Schedule 1, Schedule 2, Schedule 4 and Schedule 5. भाई कौन सा schedule है? We know that Companies Act has 7 schedules. और जो पोल कर दे, क्या वो मुझे बता सकता है कि शेड्यूल 1, 2 और 4 और 5 मतलब चारों में चलो क्या है? देखती हूँ पोल में क्या जा रहा है। यहां तो आपके मन में सॉलिड कंफ्यूजन है। यू डोंट रियली रिमेंबर द शेड्यूल, विच इज डिसअपॉइंटिंग टू नो। 40%, 36% स्टूडेंट्स ने सिर्फ मुझे दिया है करेक्ट आंसर। माय डियर, इट इज शेड्यूल 5। शेड्यूल 1 आपका बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। हाय अविनाश अग्रवाल, वी विल डेफिनेटली कम अप विद द सेशंस फॉर फाउंडेशन एज वेल। ठीक है, डोंट वरी, जस्ट स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स एंड विल कंडक्ट सेशंस फॉर यू एज वेल। ओके, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की बात करता है। अगर हम शेड्यूल 2 की बात करते हैं तो दैट टॉक्स अबाउट डेप्रिसिएशन। शेड्यूल 4 की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो यू शुड नो अबाउट इट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, तो शेड्यूल 5 हमारा फाइनली क्या है? इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ WTD एंड MD मैनेजर, जहां पे हम एलिजिबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं। चलो, moving to question number 17. Managerial remuneration to all managerial personnel is maximum, है ना? तो हमसे सेक्शन 197(1) में जितना हम मैक्सिमम एक ओवरऑल लिमिट पढ़ते हैं, हमसे वही पूछा जा रहा है। नो फर्दर क्लासिफिकेशन, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इट्स सिंपल, maximum managerial remuneration. Is it 5%? Is it 8%? Is it 11%? Or is it 15%? So we have 4 options, A, B, C या D. चलो बताओ, फटाफट से बताओ। Everyone जल्दी पार्टिसिपेट करो। 83% स्टूडेंट्स, क्या बात है? करेक्ट आंसर, ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर ही गलत हो रहा है। ऑप्शन सी 11%। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, स्ट्रेट अवे लिमिट, अरे यार आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वॉचिंग। Independent directors are not entitled to get what? Sitting fees, reimbursement of expenses, stock option, commission on profit. See, independent directors may get sitting fee. They may also get reimbursement of expenses. They may also get profit related commission. In fact, I can say they also get remuneration, ठीक है, in cases, ठीक है, but they are not entitled to stock option. तो सीधा सुलझा हुआ क्वेश्चन, जिसका सुलझा हुआ जवाब option C. Question number 18, our correct answer is option C. 63% students giving me the correct answer. पोल थोड़ी देर के लिए चल सकती है हमारी। जितने भी बच्चे हैं भाई, आखिरी क्वेश्चन में तो जरूर आप पार्टिसिपेट कर लो, इफ नॉट मोर। एंड नाउ आई वांट एवरीवन टू शेयर आंसर्स विद मी।
भाई कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए? 18 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए? चलो फटाफट से बताओ। 13 आशुतोष, 18 ऑन 18, क्या बात है। 15 आउट ऑफ 18, गुड, नॉट बैड, ब्यूटिफुली कंडक्टेड मैम, कैरी ऑन, थम्स अप दीपक। कुणाल 13, मिस्टर कन्नन 18, दुष्यंत 15, पूनम 18, गुड गुड, मधु 16, 15, 16, 13, 17, 16, ग्रेट। भाई बड़ी खुशी होती है आपके ऐसे मार्क्स देख के। एंड एंकरेज ऑल योर फ्रेंड्स, एंकरेज ऑल योर सीनियर्स, जूनियर्स, भाई जहां पे भी जो भी सीनियर इन टर्म्स नहीं, ऐसा नहीं कि जो सीएमए बन गए उसको आके एंकरेज करो भाई एमसीक्यू करो। सीनियर्स इन द सेंस जो अटेम्प्ट कर रहा है, भाई आपसे एज में कहीं ना कहीं सीनियर है बट नहीं कर पा रहा है, उनको भी आप एंकरेज करिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन। प्रवीण आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना, ठीक है। आई थिंक वो इनकम्प्लीट सी चीज लिखी है, आई विल हैव टू स्विच टू द क्वेश्चन, तो आप कमेंट में पूरा क्वेश्चन लिखना, देन आई विल बी एबल टू आंसर। मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक, थोड़ा और क्वेश्चन डालिए मैम। दीपक एग्जैक्टली आई टोल्ड यू दिस बिफोर ऑल्सो, और मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को रिपीट कर दे रही हूँ कि भाई हम ये टेस्ट सीरीज टाइप कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें हम बहुत क्वेश्चंस नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो हम अपने मटेरियल में करते हैं, बच्चों को करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू अपलोड सिलेक्टिव क्वेश्चंस ओनली। चलो अब एक और अनाउंसमेंट मुझे करना है, वो अनाउंसमेंट ये है कि फॉर द फ्यू डेज हमारा अभी ये एमसीक्यू के सीरीज जो है ये होल्ड करेंगे हम। वाई? रीजन बीइंग वी आर कमिंग अप विद सम मोर ग्रेट सेशंस फॉर यू। तो धमाकेदार राइटिंग प्रैक्टिस सेशन जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, तो अभी हम वो करेंगे, ठीक है। तो 2-4-5 दिन आप समझ लो शायद सेशंस नहीं हो, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड आफ्टर दैट MTP डिस्कशंस होंगे, एंड देयर आर मेनी मोर लाइव सेशंस कमिंग योर वे। मैराथन फुल कोर्स की अपलोड होने वाली है, तो भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो and stay tuned to the channel. There are a lot of updates, lot of free resources coming your way for your upcoming examination. तो मिलके हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बार एग्जाम में, है ना। Thank you everyone. Thank you ma'am, you're my inspiration. Oh how sweet of you Poonam. Thank you everyone. चलो भाई मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, है ना। बाय, टेक केयर।